Okay. 0, 0, 0, and 1, and 0, 0, 0, and 1. Okay. So the first question is power potential difference. It's very easy, okay? So like you can just directly do it. Okay. So use a definition to show that. So since it is a show that question, and you know that power has a definition of like the work done over time or the rate of change of energy, right? And we know that work done is basically force times displacement. So the unit for work done would be kg meter square second negative 2. Okay, and a time is in seconds. Okay, please keep in mind, okay, in a show, in every show that question, try to show each and everything. Okay, like just write everything down, you know it. Okay, so that way your 2 marks will be secured. Okay, now power is equals to um, kg meter square second negative 2 over over seconds. So power would be kg meter square second negative 3. Okay, second negative 3. Fine, that's shown. Okay, and so by the way, use an expression for the electrical power to determine the SI equation for the potential difference. It's also very easy. We know that the electrical power has a formula IV. Okay, and the power is driven as the current has a unit of ampere A. Okay, and the power has kg meter square second negative 3 and divided by current, which is just A. Okay, and that is V. Okay, so kg meter square second negative 3 and ampere negative 1. Fine, that's done. Okay, please read the question. Khansa, please read the question. Yeah, Find speed and velocity and use these definitions to explain why one of these quantities is a scalar and the other is a vector. क्या बोलोगी कुछ बता के भी जाना प्लीज. Speed does not has a direction or Mm-hmm. velocity direction. Okay. अच्छा, by the way, you didn't define the speed. Oh, speed is a scalar quantity. अबे कद्दू define Yeah. करना है. But मतलब like the definition, not like ये speed होती क्या over है. time. हाँ. Oh, distance per unit time. हाँ. So आप ये कह रहे हो कि भाई speed is just the rate of change of distance. Okay, and velocity is supposed to be the rate of change of displacement in a specific direction. Specific direction. Okay, and the rate of change of distance has no direction. Okay, no direction. Clear? Actually, by the way, if you check the marking key, it's rather mm, distance over time, displacement over time, there's scalar, no direction. Okay, fine. And let's see the examiner report. आपसे कहता है कि speed and velocity may best be defined in terms of the rate of change of distance displacement with respect to time. Okay, so yeah, so either to write the rate of change of distance or to write the distance over time. Okay, in many script the ratio was given where such a ratio is involved. Candidates should be discouraged from using the loose wording such as over time. कंसा सुन रही हो ना कंसा. जी sir. सही ना, वो थोड़ी गालियां देता है, सही ना, so be careful. Okay. So rate of change of so either right rate of change of displacement or over time वो अच्छा नहीं समझ रहा. Okay, some explanation was inadequate because they include only the reference to the distance as a scalar and displacement as a vector. It is expected that the explanation would be included in terms of the magnitude only and the magnitude and direction. Okay, fine. चलो भाई आ जाओ, आगे आ जाओ, agreed करो please. A ball is released from rest and falls vertically. The ball hits the ground and rebounds vertically as shown in figure 2.0. Release from the rest means initial velocity is Zero. okay.
And release from the rest mean acceleration is 9.1. 8-1, positive or negative? Positive. Okay. And it hits the ground, fine. चलो आगे आ जाओ. Variation with time t of the velocity v of the ball is shown in figure 2.2. अच्छा, by the way, can you wait, let me. Okay, so let's say this is the bouncing. Okay, so can you tell me, मैं जरा point लगा देता हूँ. Let's say this is A. Okay, this is B. This is C. This is D. Okay, so can you tell me which point from the graph is here on the diagram? मतलब कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं? Let's say yes. Any idea? कौन सा Uh, पॉइंट कहाँ कहाँ पे हो सकता है? ए बी सी डी जो है वो कौन से पॉइंट कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं? Like देखो, extreme, the point should be on the extreme position, right? Either at this point or at this point or at the maximum height or right here, right? These are the 4 points. So कौन सा कहाँ पे होगा? सर ए वाला जीरो पर है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो। होगा कहाँ पे? इधर? ऊपर zero. मतलब जी। यहाँ पे हो गया. Okay, so this is A. Okay, fine. Where should be B B? जब ground hit कर रहा है, ग्राउंड पे हिट कर रहा है. वेरी गुड. C? जब rebound कर रहा है, यहाँ पे. Okay, H just का at the rebounding. Okay, clear? Okay, सर ये सी वाला उधर क्यों है? क्योंकि रिबाउंड अच्छा कर रहा है, वो डायरेक्शन चेंज कर रहा है बस. सही. सो बेसिकली दिस होल टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर, लाइक वो कांटेक्ट टाइम है, राइट? सो ड्यूरिंग दिस टाइम द ऑब्जेक्ट रिमेन इन कांटेक्ट विद द ग्राउंड एंड चेंजेस डायरेक्शन. तो ये है, राइट? यस. आगे बताओ. और D फिर जब rebound कर मतलब ऊपर जाए. You want a point? जी. No. D is actually this point. Okay. क्योंकि क्योंकि just before hitting the ground there should be the maximum velocity, and this is a point. Let's say x is this point. Okay, clear? क्योंकि at maximum height your velocity is zero, right? Clear? Yes. जी सर. Okay, fine. So, and by the way, this area will be the distance of the first bounce, right? And like ये जो height है. Okay, so ये, let's say h1 is basically, or you can find out using this h1. This is h1. Okay, and then when you find out this area. Okay, so that will give you, yeah, the h2, maybe this one. Okay, h2. Okay, is that clear? जी फाइन. सर. आ जाओ, ऑपरेशन कर लिए. अरे लो, क्वेश्चन कुछ और ही पूछ लिए. ओके, आ जाओ भाई. बता दो, पढ़ लो, रीड कर लो प्लीज. The resistance is negligible without calculation. Use figure 2.2 to describe the variation with time t of the velocity of the ball from t is equals to 0 to t is equals to 2.1. 2.1 second. Okay, fine. So basically you have to explain 2.1 second means यहाँ तक. 2.1 second mean at this point. Okay, at this point mean इस point तक बताना है, right? समझ पा रहे हो? जी So you can say, आप points लगा सकते हो ग्राफ पे, right? You can say that कि at t equals to 0, where x-axis is 0, the velocity is also 0, right? Just before hitting the ground, the time is 1.1, I think. Okay, so just before hitting the ground, the time is 1.1 second, and the velocity reaches to 10.48, 10.8. Okay, 10.8. Getting now? जी. सही है. अच्छा जी, ये आ गई. And just after losing the contact from the ground, इसकी velocity है at time equals to 1.2 second. Okay, so at this point at C, it is basically, it has a time of 1.2 second. Okay, and the speed is 8.8, I think. Okay, 8.8.
but in the opposite direction. Okay, and at 2.1 second, it reaches the maximum height and its velocity is zero. Fine. चलो आ जाओ, ये अंग्रेजी लिख देते हैं यहाँ पे, सही है. So हम कह सकते हैं कि भाई the ball accelerates from the rest uniformly. Okay. um and hits the ground at t equals to 1.1 second with the velocity of how much? 10.8, with a velocity of 10.8. Okay, then it rebound at t equals to 1.2 seconds, or just 1.2 second, with a velocity of 8.8 in the upward direction. In the upward, so upward is due to the negative sign. Okay, in the upward direction. Okay, and uh then it acha, by the way, in the upward direction. Okay, then it reaches the max height at t equals to 2.1 second with constant deceleration of 9.81, where its velocity is zero. Okay, fine. So since this is a 3 mark question, let's just see the examiner report. Okay. So the examiner said it was expected that the candidate would identify the relevant time interval together with a constant acceleration. Okay. So rebound and also deceleration to zero speed with the same magnitude as the acceleration. Okay, I think I didn't mention the same magnitude as the acceleration. There were few and this is because the gradient of the graph is same, right? So there were few complete answers in general. The majority of them were limited to satisfactory identification of the rebound. Okay, fine. So बच्चों को ये तो पता था कि rebound हो रहा है, but they don't know how to write it down. Okay, so rest from the okay. mm, अच्छा जी, upward है. You can uniformly, you can add the value uniformly at 9.81, right? And hits the ground. You can just add the value. Okay, so that's it. Fine. चलो आगे आ जाओ, आगे रीड कर लो प्लीज. सर हम्म. यूनिफॉर्मली और कांस्टेंट एक ही चीज है ना? हाँ जी. ओके चलो आगे आ जाओ. Calculate the acceleration of the ball after it rebounds from the ground. Show your working. अच्छा, maybe possible कि acceleration would have some different value, or okay, fine. So okay, if they're saying show your working, तो आप क्या शो करोगे? What will you show in your working? Formula. अबे क्या फॉर्मूला? Acceleration is a gradient of a velocity Yes, triangle. yes. You have to write that down. Okay. Getting na? So you Yes. have to write k acceleration equals to the gradient. Okay, this is the thing that you shown. Okay, because it's a 3 mark question, so वो आपको इस पे number देगा. If you don't write, then you won't get mark. Okay, and then you have a So equals change in the velocity.
over change time. Yes. Do we have to add the two, like the acceleration for rebounds? Actually, they're not asking for the rebounds. Ek minute. So they're saying calculate the acceleration for the ball. It rebound from the ground. Okay, after it rebound from the ground, right? So after it rebound from the ground, which mean so from take 1 point as this one, which is 1.2 comma 8.8 with a negative sign, and take the other point as 2.1 comma 0. Okay, so they're not asking you the change in or the acceleration at the point of rebound. Okay, so you don't have to add the two velocities. Okay, so by the way, you have 8.8, right, with a negative sign. Divide that by 1.2. Okay, calculate the acceleration. But wait. It rebounds twice, so that's why I thought you have to add it. Wait. Uh, the acceleration of the ball from the ground. Acha, by the way, the acceleration is the speed is 8.8, okay, and over there the speed is 10.8. Mm, and if you consider this value, okay, and you have the time of, अच्छा by the way, this is 1.2, बट ये जो इसका टाइम होगा वो इसका टाइम आपने लेना होगा यहाँ से यहाँ तक का. This is 1.1 and सही है. So just take this value as 8.8, okay, comma 2, comma 3, okay. So the other point is, so the first point is 1.2 comma 8.8 with a negative sign, okay, and the other point is 8.8. This is the x-axis, so this is the y-axis, comma 3, okay, and just divide. So 8.8 minus and then 8.8 divided by the time, which is 3 minus 1.2, or the acceleration, right? कितनी आती है? 9.78. 9.78. Okay. Okay जी, 9.7. 9.78 or 9 point, you can just round it off to 9.8, okay? I think by the way, if somebody picks this point, okay, so it will also get the correct answer, okay? You don't have to pick that top wala point, okay? Like if you pick 2.1 comma 0 and 1.2 minus 8.8, so you'll still get the same answer, okay? Fine. So wait, let me see. 9.78, 9.8, 9.6. Okay. So ये सारे accept कर रहे हैं. And if you majority of the candidate were correct, although they were okay, fine. Incorrect, okay. Power of 10 के problem आ रहे हैं, सही. Okay, please move on. Calculate for the ball from t is equals to 2, t is equals to 0 to t is equals to 2.1 second, the distance moved. The distance move का मतलब देखो टिप्पा खा रही है, सही है. The ball is taking bounce. Okay, तो distance move का मतलब this distance and then this distance, right? Which mean this area plus this area, right? Making sense? जी Perfect. जी So, and again, they are giving you 3 mark. So, आप क्या लिखोगे यहाँ पे? अच्छा, now they're purely saying कि from this to that. So, you first have to mention कि distance is equals to the area under the graph, okay? Or area, wait,
Area, we have two areas, huh? So we can say area above the graph or area below the graph, okay? Area above area above the, अरे यार, wait. अच्छा जी, सो एरिया अबव द एक्स एक्सिस एंड एरिया बिलो द एक्स एक्सिस, ये मैंने लिख लिया। जरा वैल्यूज लो और कैलकुलेट करके बताओ कितना आ रहा है। सो द फर्स्ट पॉइंट इज 0,0, and the second point b, the point b is 10.8 comma 1.1, okay? So ये हमारे पास आ जाएगा। So area above the x axis, सही है, which is 1/2, सही है, times 10.8, okay, times 1.1, okay, plus the area below the x-axis, okay, which is 1/2 into 8.8, okay, times it by um, so the below area below the graph is starting from 1.2 and ending at 2.1, which means 0.9 का 2 है time है, सही है? So 2.1 minus 1.2. You do not have to consider the sign in the velocity because you are finding the distance, right? And that is the velocity time graph, so it actually give you the displacement, right? So for the distance, you just have to ignore the sign, okay? Yes, निकाल दो कितना आ रहा है। 9.9. 9.9, okay, fine. 9.9, okay, आगे चलो, आगे क्या करेंगे? Displacement from the initial position. Hmm. Okay, if they're asking for the displacement, which means k, you have to find this thing, right? Because this is the distance traveled and this is the distance traveled downward and this is the distance traveled upward. So when you subtract the two, or when you subtract the two areas, you will get the displacement traveled, okay? Clear? So for the working, I can just copy that down and मैं इसका नाम change कर सकता हूँ from distance to displacement, okay? And I just put negative sign right here, okay? So एंड सेम चीज़ है, जस्ट आपने जो है ना नेगेटिव लगा देना है। कितना आता है? 1.98. 1.98, okay, 1.98, so we can round it off to 2.0, okay, so 2.0, फाइन। अच्छा, इसकी जो है ना, ऑल दो मार्किंग की मेरे को मसला नहीं है, इसकी एग्जामिनर रिपोर्ट बस मुझे चेक करनी है। 9.9, 1 पॉइंट, ओके फाइन, इसकी एग्जामिनर रिपोर्ट आई हैव टू चेक, ओके। इन द आंसर्स ऑफ मैनी in the majority of the answer, it was realized that the distance should be calculated from the area and that more than one area is involved. A common mistake was to read the graph scale incorrectly. Okay. In some other answers, incorrect areas were identified. Okay. Okay, fine. Chalo. Okay. आ जाओ भाई, ये रीड कर लो। Figure 2.3 sketch the variation with t of the speed of the ball. Speed of the ball, पीछे velocity of the ball दे रखी थी, so what will be the difference between the speed of the ball and the velocity of the ball? Yes. सेम होगी। है। ओके, है, पक्की बात है। और कोई खान साहब क्या कहती हो? यस, एनी आइडिया? कुछ तो बोलो यार। नहीं? ओके, एनीबडी हैज एनी आइडिया? मैंने कोई आइडिया कि स्पीड और वेलोसिटी में कोई फर्क होगा? It's never negative. क्या क्या क्या, दोबारा दोबारा। Speed negative नहीं होती. ओए होए, तो मतलब ग्राफ कैसे बनेगा? Like the same shape, but it doesn't go to negative. It
वो stays in positive. नेगेटिव वाला कहाँ जाएगा, वो उड़ा दे। नहीं, वो उसकी इक्विवेलेंट नेगेटिव में जो स्पीड है उसकी इक्विवेलेंट बस पॉजिटिव में आएगी. It will उफ go to zero and then it यार। will come back up. So टाइट। we'll make the negative in the positive एक ही जगह पे ना। section. नहीं नेगेटिव नहीं बनेगा ना ब्रो, सारा पॉजिटिव में बन जाएगा, समझे। एवरीथिंग विल बी इन पॉजिटिव, राइट। देखो कैसे कैसे बनाते बनाते, ओके। सो टेक द फर्स्ट पॉइंट दैट इज 0,0, द अदर पॉइंट इज 1.1 comma 10.8, okay। so so this is 0,0 and this is 10.8 comma 1.1, right, one ये right here, right, and then the okay, so it then goes to 0, अबे लो ग्राफ पीछे रह गया। It then goes to 0 at this point, okay, in the middle, okay, 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 so ये आ जाएगा इधर, ये आ जाएगा इधर, okay। so एक तो लाइन स्ट्रेट बन जाएगी, सॉरी, okay, and then लाइन जाएगी इस तरह से, okay। एंड देन जो अगला पॉइंट है दैट इज बेसिकली 1.2 comma -0.8, -8.8, so that should be in positive, okay। so 1.2 and 8.8, so 1.2 and 8.8 would be right here, okay। so the line should go like this, okay, okay, so and then from this point it reaches 0 at 2.1, at 2.1, okay, it reaches 0 at 2.1, right here, okay, and then it rises again from 2.1 to 3 and till 8.8, okay, so from 2.1 to 3 and 8 point, okay, perfect guys, is that clear, बच्चों समझ में आ रहा है? ओके, मार्किंग की देखते हैं, मार्किंग की में क्या गंदी बातें कर रहे सर हैं। बस 2.1 तक ही आएंगे हम? उसने 2.1 तक बोला है? 0 to 2.1 सेकंड? ऐसा बोला नहीं, बोला तो नहीं कहीं पे। सर इसका ऊपर वाले डेविएशन, में। ओके, दैट इज नॉट बेसिकली रिलेटेड विद दैट पार्ट। देखो ना, अगर ये दिस इज रेफरिंग द फोर्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन एंड फोर्थ पार्ट इज रिलेटेड विद दिस पॉइंट, हम्म, और मे बी नॉट, देखते मार्किंग की, देखते क्या मार्किंग की कहती है, कहाँ तक जाना चाहिए। आई डोंट थिंक सो कि पूरा होना चाहिए। Okay, the correct shape with a straight line and all the lines above the axis. Okay, this is for 1 mark. Correct time for 0 speed. Okay, and 2.1. Okay, peak speed at this. Okay, look. So वो 30 तक जा रहा है. Okay, और 3 सेकंड तक जा रहा है. Clear ना? And अगर आप इसकी जो एग्जामिनर रिपोर्ट है, अगर आप एग्जामिनर रिपोर्ट गो थ्रू कर लो, so the examiner says कि भैया many candidates found it difficult to draw the correct graph shape. The common error were either to omit the section showing the rebound or indicate the time where the speed was constant. I constant. Okay, fine. चलो भाई आ जाओ. That's done. अच्छा जी, ये तो बेकार सा क्वेश्चन आ गया. अच्छा जी, चलो कोई, इब्राहिम तुम करवा दो ये. इस इब्राहिम से Two रीड कर लो. balls X and Y are supported by long strings as shown in figure 3.1. The balls are each pulled back and pushed towards each other. When the two balls collide at the position shown in figure 3.1, the strings are vertical. The ball rebounds in opposite direction. Figure 3.2 shows data for X and Y during the collision. Display. Okay. So you have to use the law of conservation of momentum to determine the mass m of y.
Okay, भाई क्या करेंगे? So before the collision दे रखी है, after the collision दे रखी है, just put in the values and you'll get the mass. Okay. So they're giving you 3 marks. Just write total momentum before should be equal to total momentum after. Okay. So total momentum before is going to be 50 times 4.5 plus m times negative 2.8 equals to 50 times after the collision it is moving with 1.8 velocity and plus m times 1.4. समझ गया? Now 50 times 4.5 and plus 50 times 1.8, okay, equals to m times 2.8 plus m times 1.4. Okay, and then 50 times 4.5, 5.5, and 6.3 divided by 4.2 equals to m. Okay, कितना आता है भाई? Yes, how much? भाई कैलकुलेटर लेके बैठा है कि माइक बंद करके बैठा है? So I am getting 75. Okay, exact. Yes, perfect. 75. Okay, done. आज भाई, state and explain whether the collision is elastic or inelastic. Mhm. तुम कह सकते हो कि भाई for the elasticity of the collision you can either write a अच्छा by the way state and explain whether. Okay, so you can either find out the total kinetic energy before the collision and total kinetic energy after the collision, and if they're equal then you can say elastic collision. If they're not equal you can say inelastic है, or you can say the relative speed of approach should be equal to the relative speed of separation. So the relative speed of approach is 4.8 is 6.3 and 2.8 plus 2.8 plus 1.4. So, so the relative speed of approach is not equal to the relative speed of separation. So the collision is inelastic. Okay. The relative speed of approach is not equal to the relative speed of separation. Okay. So inelastic. Inelastic. Okay. Now, तुमसे कह रहा है कि use the Newton's second law and third law to explain why the magnitude of the change in momentum of each ball is the same. ऐसे कोई explain कर सकते हैं? Anybody? करो चलो करवाते हैं. ईशा जिंदा बैठी हो ईशा? जी सर। ईशा कुछ बता सकती हो इसके बारे में? कुछ लाइट डाल सकती हो इस पे? सर थर्ड लॉ तो वही थी ना कि like if an object x like exerts a force on object y then it's going to exert the same force of the same magnitude but just in different direction. Okay. And then second law was like F equals m mass into acceleration, so like changed it's directly proportional to the change in momentum, ऐसा ही कुछ था। अच्छा. So हम्म। तो इसको यहाँ पे relate कैसे करोगी? मतलब how you relate in this scenario? नहीं? कोई आइडिया? नहीं। नहीं? So अरे could you यार go come back to on. the diagram? The diagram. Okay. I mean the table. Okay. Bro, you just need, you don't have to use the values like for that last No, part, by I'm the way. not. I'm just seeing the
Mass is 75, right? Yep, 75 gram. 75. Yes. So, why will have a greater momentum? So, will have a greater. No, come on. They are saying that both have the same momentum. Okay, they have the same change in momentum, right? Like they stated that in the question, right? So you can't go against them. You just need to give the supporting statement for that, right? Okay, सर ऊपर जाएंगे थोड़ा. बिल्कुल बोलिए. अरे मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पे देखो जरा. ये दो बॉल है, राइट? अच्छा, ये बॉल लाइक ड्यूरिंग द कोलिजन ये बॉल इस पे फोर्स लगा रही होगी अदर बॉल पे, राइट? एंड इसी को अगर हम कॉपी पेस्ट कर लें, शिट्स. सही है. And so let's say this ball is A and this ball is B. So this is FA and this will going to be FB, right? FB. So yeah. So and this is during the collision wala case. During. अच्छा, by the way, कोई और है बताने वाला? During. Imad, can you explain? During the collision. Yes, Imad? Anybody? अच्छा, Sir, no idea? during the collision, Mm-hmm. the the balls exert same magnitude of force but in opposite direction, and the contact time is the same. So the change of Mm-hmm. momentum is same. अबे करके रखा हुआ है पेपर, होशियारी कर रहा हूँ यहाँ पे बैठ के, है ना? बहुत टाइट, बहुत टाइट. ओके. Nice. I didn't solve 21. है. ओए होए, नाइस देन, ऑसम. ओके, और कोई है बताने वाला? और मनाइल बता सकती हो? मनाइल कोई आइडिया लगा सकती हो? Same answer, sir. सेम आंसर. कॉपी कंट्रोल सी कंट्रोल वी. ओके. एंड रेयान कुछ कह सकते हो रेयान? यस. No, sir, I don't know. डोंट नो. ओके फाइन. सो बेसिकली अगर तुम यहाँ पे देखो, सो पहले तो तुमने लिख देना कि भाई बॉल ए विल एक्सर्ट द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स इन बॉल बी एंड बॉल बी विल एक्सर्ट द सेम अमाउंट ऑफ फोर्स ऑन बॉल ए, राइट? सो तुम्हारे पास जो है अच्छा, कांटेक्ट टाइम भी दोनों का सेम होगा, राइट? क्योंकि दोनों एक दूसरे से कांटेक्ट कर रही हैं, सो देयर कांटेक्ट टाइम विल आल्सो बी द सेम, राइट? सो जब आप जो है ओके, सो अगर आप देखो, सो एफ ए. So this is the force A. And acha, by the way, force A is supposed to be the contact force, and force B is also the contact force, right? And since they are contact for the same amount of time, and they're like they are contacting between the same object, so force A and force B will also going to be equal in magnitude and opposite in direction, right? So if I write the equation for the first object, so that will Newton's second law for the first object, so change in momentum over change in time, right? So Fa times delta t equals to change in momentum, right? This is the first equation for that one. अच्छा, अगर हम उसके लिए लिखें, so if we write for the second particle, so that would be this equation. Okay, change in momentum, right? Now अब आपको ये पता है FB and FA, they both are same, right? Because of the Newton's third law, right? And the contact time is also same, क्योंकि वो दो ही पार्टिकल है, राइट? सो यू कैन से दैट द चेंज इन मोमेंटम since fa delta t is equal to fb delta t. Okay, so change in momentum of object A should be equal to change in momentum of object B. Okay, is that clear? ईशा समझ में आता है? रेहान समझ में आता है? इरफान, आर यू गेटिंग? Yeah. Sir, can पक्का? you Yeah. repeat it? ओके, मैं लिखने लगूँ उससे इंशाल्लाह आ जाएगा. अच्छा जी. सो हम ये कह रहे हैं कि भाई बॉल, अच्छा, ट्राई टू यूज द सेम वर्ड. ओके, डोंट से ए एंड बी, जस्ट से एक्स एंड वाई. ओके, सो बॉल एक्स विल अप्लाई इक्वल magnitude of force
to ball Y, to ball Y, and ball Y will apply equal force on X in the opposite direction. Okay. So this is the Newton's third law, and you applied it in this scenario. Okay. So for every ball, force is the rate of change of momentum. Force is the rate of change of momentum. Okay. अच्छा जी. So and contact time for both the ball is same. Okay. So change in momentum. एक minute. So change in momentum for both the ball will be equal and opposite. Okay. Is that clear, Riyan, now? Yes. Yes, सर sir. ये फिर एवरी बॉल के बाद से एक्सप्लेन कर दोगे फिर से? Okay. Every ball कहाँ है भाई? For यहाँ से. जी सर. Okay, so for every ball, force is a basically now मैंने जो ना Newton's second law लिखा, and Newton's second law is basically the force is a rate of change of momentum, right? So this is just the Newton's second law, right? And after that, the contact time is same because of the Newton's third law, right? क्योंकि यहाँ पे Newton's third law लग रहा है, and Newton's third law कहता है कि contact time same होनी चाहिए. So that is why I stated that there's the same contact time, right? एंड सो अच्छा चेंज इन मोमेंटम, अच्छा जो फोर्स है, फोर्स एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, दोनों इक्वल है, ऑपोजिट है, राइट? सो इक्वल इन मैग्नीट्यूड है, ये हमने इसको बता दिया, राइट? एंड हमने ये भी कह दिया कि द कॉन्टैक्ट टाइम फॉर ए एंड बी वो भी सेम है, राइट? वो भी हमने बता दिया, राइट? सो उस वजह से हमारे पास जो मोमेंटम होना चाहिए ए और बी का, दैट शुड बी इक्वल एंड ऑपोजिट, राइट? क्योंकि फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट रखनी है, राइट? क्लियर? चलो. चलें जी, आगे चलें. आ जाओ भाई. टाइट सवाल आ गया तो. ओके भाई, आ जाओ, ईशा से करवा दें. ईशा, ईशा से रीड कर लोगे प्लीज. जी. अच्छा एक A मिनट, एक spring is मिनट, सॉरी 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 सॉरी. मुझे जो है इसकी एग्जाम में रिपोर्ट दिखानी, मुझे खुद भी देखनी. ओके. So, okay, well answered. Okay, fine. Many answers were incorrect. Most candidate made a reference to the kinetic energy conservation, but did not make it clear that they were discussing the total kinetic energy. Okay, so if you just write the kinetic energy and didn't mention the total kinetic energy before the collision and total kinetic energy after the collision, then you may lose 1 mark or maybe both. Okay. Where the answers were given in term of speed, very few mention the relative speed. Okay, so please make sure to write the relative speed of approach and relative speed of separation. Okay, so otherwise they won't accept your answer. Okay, so it's of 1 mark, so they may not give you any mark for that. Okay. And for the last part, most of the candidate include the statement of Newton's second law and the Newton's third law, but for the third law, many did not apply the law to the situation. ईशा सुन रही हो ना? You have to apply the law to the जी जी. situation. Okay. Rather, a general statement was given, a reference to the time of the collision being the same for both the ball, and the relevance of this to the rate of change of momentum was rarely seen. सही हो गया?
चलो, सो ये बहुत कम था। ओके, मुश्किल क्वेश्चन था, ऐसा नहीं है। ओके, आज अभी रीड कर लो प्लीज। A spring is kept horizontal by attaching it to points A and B as shown in figure 4.1. Point A is on a movable slider and point B is on a fixed support. A cart of mass 1.7 kg has horizontal velocity v towards the slider. The cart collides with the slider. The spring is compressed as the cart comes to rest. The variation of compression x of the spring with force F exerted on the spring is shown in figure 4.2. ओके, अच्छा, बाय द वे, एक मिनट, एक मिनट। बाय द वे, द ग्राफ इज गिवन। ओके, सो ग्राफ हैज अ फेक एक्सिस, बी केयरफुल। ओके, समझ रहे हो ना, इट्स नॉट स्टार्टिंग फ्रॉम 0 0। ओके, सो बी केयरफुल। अच्छा, सेकंड थिंग, एरिया क्या बताएगा, इसका ग्रेडियंट क्या बताएगा? कैन यू टेल मी प्लीज? ग्रेडियंट इन एरिया क्या बताएगा? Spring constant आई क्यूब है, अच्छा। नहीं. ओके, यस यस यस। ओके, एंड एरिया? Nothing. ओ, कम ऑन। Energy यस, विच एनर्जी? Elastic, is elastic potential, potential energy. energy. Okay, good, 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 good. Okay, fine, fine, fine. Let's move on. Figure 4.2 shows the compression of the spring for F equals 1.5 Newton and F equals 4.5 Newton. The card comes to rest when F is 4.5 Newton. Use figure 4.2 to show that the compression of the spring obeys Hooke's law. Mm-hmm. So, if the spring obeys the Hooke's law, then क्या रूल होता है उसका, कैसे पता चलता है आपको? How do you know? The The extension जो होती straight है वो line. directly proportional होती है force से Ext और Okay. अच्छा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आप यहाँ पे देख नहीं सकते हो, बिकॉज mm, दे हैव गिवन यू द फेक एक्सेस, राइट? सो यू कैन नॉट रियली yes. सी वेदर इट इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और नॉट, राइट? Can Mm. you tell me the other? अच्छा, Yeah, you but you can for it also. to obey Hooke's law, it doesn't it like pass through the origin and it's a straight line. ये तो origin से पास ही नहीं हो रहा. अरे मेरा बच्चा, वो ओरिजिन शो ही नहीं कर रहा ना, वो तो बेसिकली ग्राफ उसने ये Okay, बेसिकली okay. ये ठीक है ठीक है. ग्राफ था सही, और वो यूं होना चाहिए था, बट उसने ना सिर्फ ये वाला पोर्शन आपको दे Mm. दिया बना के, राइट? Yes, yes, सो yes. ओके, सो लाइक यू कैन नॉट से दैट कि भाई इट्स अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन, बिकॉज ओरिजिन इज नॉट मेंशन हियर, राइट? सो एनी अदर कॉन्सेप्ट? अच्छा, by the way, we know that if the graph is obeying the Hooke's law, so ये इसका जो रेशियो आना चाहिए, यानी f over x का, that should be constant, right? क्या बोलते हो, like which is a spring constant, so spring constant should be constant, right? Throughout the graph, what do you say? Mm. Yeah. सही। so like if we just take two different points and हम उसका रेशियो ले लें, and वहाँ पे अगर सेम आता है, then it will give me, or it will show that कि भाई हमारा spring constant सेम है, right? क्योंकि क्योंकि अगर आप सोचो कि भाई इफ द ग्राफ इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, इन रियलिटी इफ इट इज पासिंग थ्रू द ओरिजिन, सो आप कोई भी दो पॉइंट लोगे, राइट? सो अगर आप इसका रेशियो लोगे, राइट, एंड इसका रेशियो लोगे, तो सेम अगर शो करता है, तो उसका मतलब ये है कि भाई आपका इसमें कांस्टेंट इक्वल है थ्रू आउट, राइट? सो हम ले लेते हैं, लेट्स से, सो लेट्स से if we consider these 2 points, okay, this point, and if we consider, let's say, let's say this one, let's say this one, okay. So this is 1 comma 2.5, okay, and that is 1.5 and 1.75, so 1.6, 1.7, okay, 1.6, 1.6, comma 3.7, 4, basically 4, okay. So so just divide the 2 points. So 2.5 over 1 is basically f over x. Okay. So f over x is equals to, so this is the first thing. Now the second thing is f over x, yeah, f1 over x1 and f2 over x2 give you कितना आ रहा है भाई, 4 over 1.6, 4 over, sorry, yeah, 4 over 1.6, सही हो गया, and this will give you k1 and this will give you k2. Yes, how much? कैलकुलेटर लेके बैठो या ऐसे ही नेटफ्लिक्स एंड चिल? सर नहीं लेके बैठी बैठी हूँ. ना, झूठ बोल रही हो, मोबाइल से कर रही हो नहीं शायद नहीं यार। है.
पक्की बात है, मिल गया? Sir, 2.5. ओके तो फाइन, दोनों का 2.5 आ रहा है। 2.5, so K1 is also 2.5 and K2 is also 2.5, right? अच्छा जनाब, so since the ratio of f over x is the same throughout the line, throughout the line, okay, so it obeys the Hooke's law. So yeah, just check the exam report. This was a general. This there was a general misconception that a straight line graph automatically implies proportionality between the two quantities. इसे समझिए ना? And सही हो गया ना? So like आप डायरेक्टली नहीं Yeah. कह सकते हो जब तक वो जीरो जीरो आपको नहीं दिख जाए, ओके? एंड Hmm. स्ट्रेट लाइन अगर वो जीरो से पास नहीं हो रही है तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, तब दे आर प्रोपोर्शनल Sir, बट नॉट if it डायरेक्टली. was passing through straight line, उन्होंने हमसे यही क्वेश्चन पूछा था. So we'll just say that it's passing through the origin, it's a straight line. बट अगर वो ओरिजिन क्लियर है तो, अगर ओरिजिन दिख रहा है हाँ, तो, अगर origin clear होता तो. हाँ 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 यस, फिर आप कह सकते थे, Okay. राइट? Okay. And candidate were expected to consider the coordinates at the 2 points, taking the ratio of the taking the ratio of the values at each point and showing that this ratio is constant. Okay, fine, fine. चल आगे आ जाओ प्लीज. कहाँ हो? अबे यार एक तो पता नहीं कहाँ नहीं, भाग. यही हूँ. Determine the spring constant of the spring. तो इसके लिए हम क्या gradient निकालेंगे? ओके सो आप कह दो कि कोई ग्रेडियंट इज इक्वल्स टू स्प्रिंग्स कांस्टेंट. क्या चीज तोड़ी बैठी हुई? Uh, स्प्रिंग्स कांस्टेंट. calculate. हम्म. इतना जुल्म कर रही हो, यहाँ तक आवाज आ रही है बेटा? अच्छा जी, सो फिर उसके बाद अब्बू को बोल दोगे कि स्कूल में चोरी हो गया, Hmm. नया ला दें. अच्छा जी, सो अच्छा फाइन फाइन फाइन, सो हमारे पास आ रहा है. सो यू कैन टेक द 2 पॉइंट्स जो कि हमने यहाँ पे ले रखे हैं, बट यू हैव टू कन्वर्ट इट फ्रॉम सेंटीमीटर टू मीटर. तो वो हमने करना पड़ेगा. सो 1,2.5 एंड द अदर वन इज 4, पता नहीं कितना था. अच्छा 1.6, 4. ओके 1.6, 4, 1.6, 4. ओके सो आप कर लो 4 - 2.5 डिवाइडेड बाय 1 - 1.6, और यहाँ पे लगा दोगे 1 exponent -2 टू कन्वर्ट इट इनटू सेंटीमीटर, कन्वर्ट फ्रॉम सेंटीमीटर मीटर. ओके कितना आता भैया? वो 2.5 हमने ऊपर निकाल रखा था, सो डिवाइडेड बाय 100 है ना. सो आपके पास हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा. सो 250 आ रहा होगा, या टू, हाँ 250 आ रहा होगा, आ रहा है 250 आ रहा है. J. Okay. So कैलकुलेट करे बगैर 1.6 कर minus लो. 1 is 1 पॉइंट, सही है. Sir, अगर आप 6 minus 2.5 1. को मल्टीप्लाई करो 100 से तो यही आएगा ना? अच्छा हाँ हाँ सही सही सही. 1.6 - 1 - 1.6 क्या मसला है? बोलना इब्राहिम, कहाँ गया? नहीं सर कुछ नहीं. ओके चलो आगे आ जाओ. Determine the lasting potential energy EP stored in the spring due to the card being brought to rest. ब्रॉट टू रेस्ट बोले तो क्या मतलब होगा? कुछ थोड़ी अंग्रेजी समझा सकते हो? कुछ तो बोलो यार. खुद समझ लें. अच्छा, अरे यार ऐसा मत बोलो Like यार. when it's like stopping ना, जो वो जाके अबे रुक मेरे जाएगा. को अंग्रेजी कन्वर्ट करके नहीं बताओ, फिजिक्स में बताने का बोल रहा हूँ कद्दू. वो तो अ, उतना तो मैंने भी पढ़ा हुआ है यार, डी तो मेरा भी बन गया था फिजिक्स, इंग्लिश में. तो बस आप एनर्जी निकाल लेना, क्या जा रहा है? ओके निकाल दो. गलत आएगी ना, मसला ये इस वजह से बोल रहा हूँ क्योंकि वो फेक एक्सेस दिया हुआ है, आ, इस वजह से बोल रहा हूँ, यस. तो फिर कैसे निकालेंगे? अरे यार डायरेक्ट ही पूछ लियो. अच्छा जी,
चलो निकाल लेते हैं। बाय द वे, आपने वैसे स्प्रिंग कांस्टेंट निकाल लिया, सो इधर यू कैन यूज एफ इज इक्वल टू, अच्छा ये तो आप ये कह दो कि कोई इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू एरिया, सही है, इलास्टिक potential energy equals to area under the graph, right? This is the first thing. और तुम कह सकते हो कि भाई इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी अगर आप स्प्रिंग कांस्टेंट से रिलेट कर रहे हो तो 1 ओवर के एक्स स्क्वायर, राइट? ये दो फार्मूला कोई भी एक यूज़ कर लो, सही है। अच्छा जनाब, लेकिन फड्डा ये है कि भैया आपका जो ग्राफ है दैट इज बेसिकली एट दिस पॉइंट, सही है, और ये जो है ना जा रहा है 4.5, एक्स एक्सिस पे आ रहा है 1.8, 1.8 कॉमा 4.5, ओके। ऐसा मे बी, बच्चे जो है ना मे बी सिर्फ ये वाला ग्राफ लेते हैं, राइट? ये जो इतना पोर्शन उनको दिख रहा है ना, यानी दे टेक, दे मे टुक दिस पॉइंट, दिस पॉइंट एंड ये वाला पॉइंट और सब्ट्रैक्ट कर देते, राइट? दिस इज नॉट रिक्वायर्ड, ओके। आपको पूरा ग्राफ लेना है, राइट? यानी आपके पास जो ग्राफ है, वेट लेट मी शो यू, आपको जो ग्राफ दिख रहा होगा, ये आपके पास है ना, ये ग्राफ जो है ना ये 0 0 है, सही है। ग्राफ यहाँ से पास हो रहा है, राइट? एंड ग्राफ पे जो ये वाली वैल्यू आ रही है, राइट, जो एंडिंग वाली वैल्यू आ रही है दैट इज, एक ये वाली वैल्यू आ रही है एंड एक ये वाली वैल्यू आ रही है, सही है। एंड ग्राफ यहाँ से कहीं से स्टार्ट हो रहा है, सॉरी, ये स्टार्ट हो रहा है, ओके। सो सो यहाँ पे आपके पास आ रहा है 4, यहाँ पे आपके पास आ रहा है 1.8, ओके, और यहाँ पे आपके पास आ रहा है 0.6, और यहाँ पे आपके पास आ रहा है आई थिंक पता नहीं कितना था, 1.5 था, आई थिंक 1.5, यस 1.5, ओके, 1.5, राइट? सो एक्चुअल जो ग्राफ आपको दिख रहा है ना पिक्चर में, वो ये दिख रहा है। सो दिस इज द ओनली थिंग दैट यू कैन सी ऑन ऑन दैट गिवन ग्राफ, राइट? आपको ये बना के उसने दिया हुआ है, राइट? बट यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द होल थिंग, राइट? तो उसके लिए फिर आप जस्ट यूज कर लो, सही है, 1/2 एफ अगर यूज करो तो 4 हो जाएगा, और एक्स आपके पास है 1.8, एक्सपोनेंट -2, निकाल दो भाई। 2 टाइम्स 3.6 Sir, एक्सपोनेंट won't -2, the force be 4.5? सॉरी यस, 4.5, यस। अबे भाई, चलो, कितना आता है भाई? कोई है कैलकुलेटर वाला? इसे अगर टूटा नहीं है तो निकाल दो यार। सर एक सेकेंड। अरे लगता है काम हो गया उसका। नहीं नहीं सही है, एक सेकंड निकाल लूँ बस। सर 0.0405। 0.0405, ओके, चलो। सर 0.0405। अरे यार हैवी हैवी हैवी, 0.405, 0.01 ले सकते हैं, 0.041 ले सकते हैं, या ओके दोनों एक्सेप्टेबल है। चलो ओके, आगे आ जाओ, आगे रीड कर लो प्लीज। Calculate the speed v of the card as it makes contact with the slider. Assume that all the kinetic energy of the card is converted to the elastic potential energy of the spring. अच्छा जी, क्या कर लें? So क्या हम इसको like k equals to potential energy रखेंगे? अच्छा ऐसा So कर we're रही हो। gonna do 1/2 mv square equals mgh. एम जी एच, अबे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी पे एम जी एच क्यों कर रही हो? Oh sorry. भाई, वो जो अभी हमने निकाली है। हाँ जी, तो उसकी वैल्यू रख लो ना। हाँ आप जीरो पॉइंट जीरो उसका फोर फार्मूला क्यों जीरो ले रहे फाइव हो? ओके सॉरी भाई। फाइन, एंड जस्ट 0.0405 इंटू 2, मास दे रखा है भाई, इसका बोझ कितना है? A card of a mass 1.7, okay fine, 1.7 and divided by under root, so ये आ जाएगी v, 0.22। 22, ओके, 0.22, फाइन, सही हो गया, कोई मसला? अच्छा जी, टाइट क्वेश्चन आ गया तो ये क्वेश्चन करवा लेगा, किसी का इलेक्ट्रिसिटी कच्चा है? वैसे इलेक्ट्रिसिटी आसान सा लग रहा है, ओके, आई थिंक करवा लेते हैं।
चलो रेयान से करो, रेयान प्लीज रीड द क्वेश्चन. The variation with potential difference V of current I for a semiconductor diode is shown in figure 5.1. कौन सा हो सकता है Use वैसे? अबे figure रुक रुक, 5. अबे रोक रो भाई, कहाँ जा रहा है? कौन सा हो सकता है सेमीकंडक्टर ये? आई हाई, अरे छोड़ो छोड़ो, आगे चलता है, छोड़ो छोड़ो छोड़ो, मट्टी डालो. Use figure 5.1 to describe the variation of the resistance of the diode between V 0 negative 0.5 and V equals to 0.8. ओके. अच्छा भाई, पहले एक बात बताओ कि what will be or what will the gradient be equal to, क्या बताएगा? एंड एरिया भी क्या बताएगा? चलो. यस. Sir, area will be resistivity. अबे रेजिस्टिविटी कैसे भाई, कैसे? हमने जिंदगी में कोई ग्राफ ऐसा Resistance. पढ़ा? रेजिस्टेंस एरिया बताएगा. करंट टाइम वोल्टेज से रेजिस्टेंस आ जाएगी. अबे वो ओम अंकल जो है ना, जो अपने ताबूत में है, वो कील तोड़ के मारेंगे तुम्हें. अबे ग्रेडियंट से आएगा ना ब्रो. Okay. 1/r. यस. बट क्या चीज? ग्रेडियंट इज बेसिकली वन ओवर आर, राइट? रेहान समझ रहे हैं? रेहान आर यू गेटिंग? Yes, sir. ओके. एंड एरिया इज बेसिकली पावर, ऑल्दो में रिक्वायर्ड नहीं है. सही है, स्किप करा उसको. ओके. सो ग्रेडियंट इज बेसिकली वन ओवर आर. ओके, लाइक अगर आप डिवाइड करो ना बाई एक्सिस को, सो आई ओवर वी ना, आई ओवर वी इज व्हाट? सो वी इक्वल्स टू आई आर से अगर सोचो, वी इक्वल्स टू आई आर, सो वी ओवर आई इज द रेजिस्टेंस. सो इफ यू जस्ट उल्टा कर दो उसको, सो आई ओवर वी बना दो, सो वन ओवर आर बन जाएगा. समझ रहे? Yes, sir. सो वन ओवर आर हैज अ न्यू नेम कॉल्ड कंडक्टेंस. ओके, नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस, ऐसे ही बता रहा हूँ. सही है. तो खैर, so basically, wherever the gradient has a least value, the resistance will have the maximum or infinite value. Okay, get it? So now you can see Yes, that sir. from negative 0.5 till approximately this point, maybe before at 4 till 4, the gradient is 0. So it will have the maximum, yeah, infinite resistance. Okay, so you can see that, you can say that um, from from negative 0.5 volts to 0.4 volt or positive 0.4 volts. Okay, the gradient is 0, so the resistance will be maximum or infinite. Okay, you can also mention that the gradient is basically 1 over the resistance, or the gradient is inversely proportional to the resistance. Okay, fine. चलिए आगे चलिए. सही है. Then uh, the okay, the gradient is the gradient increases, okay, non-uniformly from 0.4 volts to maybe this point, which is maybe 0.5 or 0 point 0.6 volt, let's say, or 0.7 volt तक वो इन वो जो है ना increasing rate से वो increase हो रहा है, right? And then the gradient is constant. Okay, so we can say that the gradient increases um, non-uniformly formally from 0.4 volts to 0. Let's say 6 7 0.7 volts, so from 0.7 volt. Okay. So increases non-uniformly from 0.4 volt to 0.7 volts. सही है. So the resistance decreases. Okay. अच्छा जी, फिर from 0.7 volts onward, the graph has a constant gradient and so has the constant resistance. Okay, and after
0.7 volts. The graph has the constant gradient. So constant resistance. Okay. चलो, अच्छा इसकी देख लेते हैं थोड़ी सी ना। इसकी थोड़ी मार्किंग की तो बेकार होती है, सही। मार्किंग की तो ये ऐसे लिखते हैं कि सिर्फ इनको पता होता है, इनके खुदा को पता होता है, कोई नहीं समझ सकता। ग्रेडियंट, ओके, रेजिस्टेंस डिक्रीजेस फ्रॉम दिस। ओके, बस इतना ही लिखा है, फाइन। और इसकी अगर एग्जामिनर की देखें, a common misconception was that zero current means zero resistance. Very good. Some candidate incorrectly thought that the gradient of the line represent the resistance. Okay, so it is the inverse or the reciprocal of the resistance. Okay, clear? आगे आ जाओ भाई, आज सर रीड कर आखिर लो। में बोलो। रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। नहीं भाई, डिक्रीज हो, यहाँ पे डिक्रीज हो, यहाँ पे रेजिस्टेंस डिक्रीज हो रही है, एंड यहाँ पे कांस्टेंट है। ओके ब्रो, दिस बेसिकली उल्टा रिलेशन है ना, द gradient and the resistance are inversely proportional, right? So at in this portion the gradient, the resistance has a maximum value, then the resistance is start decreasing and decreases to certain value, and then that it maintain that certain value in this region. समझता है? सर हाँ, जिधर रेजिस्टेंस क्या कहते हैं डिक्रीज हो रहा है वो क्योंकि करंट इंक्रीज हो रहा है ना, तो वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है इसलिए। अबे ग्रेडियंट से रिलेट करना बे। रेजिस्टेंस यहाँ पे आप वो नहीं हम्म। लगा सकते हो, ये ओम्स लॉ, यू ओनली अलाउड टू अप्लाई ओम लॉ इन दिस पोर्शन। ओके, यहाँ पे ओम्स लॉ नहीं लग सकता, यू कैन नॉट अलाउ, यू कैन नॉट अप्लाई द ओम्स लॉ इन दिस रीजन, राइट? बिकॉज इट्स अ सेमी कंडक्टर। ओके, इट्स नॉट फॉलोइंग द ओम्स लॉ इन दिस रीजन। समझ रहा है? समझता है? जी सर। सही, ओम्स लॉ के लिए स्ट्रेट लाइन होना जरूरी जी, है, और इसके अदरवाइज। बाद सर कांस्टेंट है। हाँ, तो वो कांस्टेंट, ये ओम्स लॉ डायरेक्ट फॉलो हो रहा है, यहाँ पे जस्ट यू यूज ग्रेडियंट वाला रिलेशन, और फिर आप बता दोगे कि भाई ग्रेडियंट और रेजिस्टेंस के पे क्या फर्क पड़ रहा है, दैट्स इट। ओके, you cannot say कि current increase हो रहा है उसकी वजह से resistance increase या decrease हो रही है, you are not allowed to relate the current and the resistance, right? Till this portion you are not allowed to do so, right? Because this is not the ohmic conductor in this region. Okay, चल भाई आगे आ जाओ। आ जाओ भाई, कौन है रेयान? Sketch the variation with PdV of current I for a filament lamp. Numerical values are not required. Okay, so okay, so हम क्या कहते हैं कि पहले जो स्ट्रेट लाइन होती है, सही है, स्ट्रेट लाइन, and then due to the flow of current the temperature increases, and that increase the resistance and the current decreases, so थोड़ा सा bend हो जाएगा। क्या समझे? सर ये नहीं समझा। ये तो ग्राफ रट्टा है भाई। ब्रो, जो सर फिलामेंट लैम्प फिलामेंट होता है, लैंप का। हाँ जी, फिलामेंट लैम्प का रूल ये होता है कि ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट, ओके, ड्यू टू द फ्लो ऑफ करंट द टेम्परेचर स्टार्ट इंक्रीजिंग, राइट? पहले नहीं होता, पहले लाइक इन दिस पोर्शन, और वो आपके पास बिल्कुल सही से चल रहा होता है, इंसान की तरह चल रहा होता है, राइट? एंड आफ्टर दैट, क्योंकि करंट फ्लो कर रहा है स्टिल सर्किट के अंदर, so the flow of current causes the increase in temperature, and that increase in temperature increases the resistance, and increase in resistance will ultimately reduce the flow of current. Okay, and that is why you can see the gradient is decreasing, which shows the increase in the resistance, and you can also see that the rate of increase in the current is also decreased. Okay, चलो भाई, आ जाओ भैया, रीड कर लो प्लीज। सर रेजिस्टेंस डिक्रीज नहीं हो रही। बेटा ये आई वी का ग्राफ है ना, इनवर्सली उल्टा रिलेटेड है, ओ डायरेक्ट रिलेट ओ क्यों कर रहा सॉरी। हूँ? जी जी सही जी। हो गया, चलो। Figure 5.3 shows a power supply of electromotive force 12 volts and internal resistance 0.5 ohms connected to a filament lamp and switch. The filament lamp has a power of 36 watts when PD across it is 12 volts. Calculate resistance of the lamp when PD across it is 12. ओके, व्हेन पी डी, ओके फाइन, क्या करोगे भाई, कुछ तो बताओ। इट्स वेरी सिंपल दो।
The power is given. Okay. The voltage is also given. Right? क्या formula लगा रहे हो? Sir, P equals to IV. IV. ओए, resistance मांग रहा है. P equals to IV. अबे कद्दू. P equals to V square और R लगा देना. नहीं? What do you say? ये तो मेरा नेट मर गया है. ये तुम शर्मा रहे हो बैठ के. ऐसे? वेट. Sir, I have no idea. अबे एक मिनट. ओके. सो भाई, उसने आपको जो है, the filament lamp has a power of 36 when the potential difference is 12, right? So उन्होंने आपको potential difference दे रखा है. They also mention the power, and they're just asking you for the resistance. Okay, so just find the resistance directly. If you apply VI or IV, right? Power equals to IV. So you first find the current, and then you apply V equals to IR, and then you put the voltage and current together for the resistance, right? So I'm getting 4. okay, so वो एक नंबर में बहुत लंबा हो जाएगा. Fine. So you were saying you are getting 4. So that would be resistance equals to 12 square divided by 36. So this is how you get 4, right? Okay. Ryan समझ Yeah. गया? Ryan. Yes, sir. Okay, आगे read कर लो. The switch is closed and current in the lamp is 2.8 amps. Calculate the resistance of the lamp. हम्म. Now, अच्छा जी, current से close कर. Okay, fine. So they are saying resistance. Okay, क्या करेंगे भाई? 2.8 एम्पियर का करंट है, सही है. So that 2.8 ampere current will flow through the lamp and also flow through the internal resistance as well, right? So how many voltage get lost at the internal resistance? 2.8 times it by 0.5. Okay, so that will give you 1.4. Okay, so over here the voltage loss is 1.4. Okay, are you getting? Yes, sir. Okay, so ये हमारे पास, अबे यार, ये हमारे पास आ गया. दिस इज द पेस्ट. ये आपको मेंशन करना पड़ेगा भाई. दिस इज द voltage loss. Okay, voltage loss. Okay, so PD across the lamp should be 12 minus 1.4. Okay, that gives you 11, 10.6, I think. Yes, sir. 10.6. Okay, now you can apply V equals to IR. Okay, so voltage is 10.6. Okay, and the current, since it is a series circuit, so remains 2.8, and R can be found. 3.79. 3.79. 3.8 ले सकते हैं. Yes. ओके, 3.8 आप कह रहे हो. फाइन. अच्छा, बाय द वे देखो, प्लीज कीप इन माइंड बच्चों, जब भी क्वेश्चन 3 मार्क का आएगा, राइट, so be very careful. Try to show each and everything. Okay, you can also include the wordings in your answer. Okay, so that will enhance your things, right? But if you write very little for the 3 mark, then you may end up losing 1 mark, or like all the 3 marks. Okay, so be careful, क्योंकि यहाँ पे अगर देखो, so they are giving you two calculation mark. Okay, two calculation mark. Okay, and basically answer mark depend on both the calculation marks. So if you didn't earn, acha, and the calculation mark required, you have to show each and everything for the calculation. Okay, so if you miss any calculation mark, your answer mark will be gone. Okay, so you will only left with the other calculation mark, right? So ये याद रखना please. अच्छा, बाय द वे, अगर हम इसकी एग्जामिनर रिपोर्ट भी देख लें, 3 नंबर दे रहा है, थोड़ी सी रिफ्रेश करा देते हैं. This was completed successfully by the majority of the candidate. The most common error was to assume that there was no internal resistance. Okay, fine. हमने उसको consider करके किया. Okay, fine. आ गया जब भाई. Explain how the two values of resistance calculated in C provide evidence for the shape of the sketch you have drawn in B. Mm-hmm. So, okay. So previously,
maybe at this point or in this region, the resistance should be a 4 ohm, right? And as the current increases, okay, क्योंकि अगर आप देखो सो यहाँ पे शायद करंट में भी कम आ रहा हो, अगर आप यहाँ से वो निकालो 12 डिवाइडेड बाय 4 करोगे, यू मे गेट 3 ओम का करंट, राइट? 3 एम्पियर का करंट, राइट? सो इन दिस केस यू हैव द ग्रेटर करंट 3 एम्पियर का, राइट? यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस इंक्रीज हो रही है, सो एज द रेजिस्टेंस इंक्रीजेस योर करंट गोज डाउन, राइट? तो बस आप ये कह सकते हो, राइट? क्लियर हो गया भाई? Yes, sir. ओके, सो हम ये कह सकते हैं कि भैया हमारे पास द resistance of the lamp, अच्छा, resistance of the lamp decreases gradient increase होगा लेकिन, so resistance of the lamp increases, लेकिन एक मिनट थोड़ा सा मसले मसाइल आ रहे हैं। सो अच्छा, जब हमारे पास 12 वोल्ट था तो हमारे पास ज़्यादा रेजिस्टेंस आ रही थी, और जब हमारे पास व्हेन वी हैव दैट 10.6 वोल्ट, हमारे पास कम रेजिस्टेंस आ रही है, ओके? एंड कम रेजिस्टेंस शोज दैट के यू शुड हैव, या चलो सही है, बस हम ये कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कह सकते हैं, सही है। सो हम ये कह सकते हैं द रेजिस्टेंस ऑफ द लैम्प इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन either I or voltage, okay? Current और voltage, सही हो गया? चलो भाई, हो गया। अबे यार कितने सर क्वेश्चन है? हाँ बोलो। सर ये वाला समझ नहीं आया मुझे, लास्ट वाला। ब्रो जब आपके पास वोल्टेज 12 वोल्ट था, सही है, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस आ रही थी 4 की, सही है। जब आपके पास वोल्टेज हो गया 10.6 का, वोल्टेज आपने कम कर दिया, तो आपके पास रेजिस्टेंस होगी 3.8 की, सही है। वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया, सही हो गया। तो सर रेजिस्टेंस डिक्रीज नहीं हुई 4 से 3.8? अबे तो वोल्टेज भी तो डिक्रीज हुआ ना, पहले वोल्टेज 12 था, हम्म, अब वोल्टेज 10.6 हो गया, तो वोल्टेज जी। डिक्रीज हो रही है तो रेजिस्टेंस भी डिक्रीज हो रही है, वोल्टेज इंक्रीज हो रहा है तो रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगी। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। हाँ, सही हो गया। ओके। अच्छा जी, आ जाओ भाई। मनाइल जरा रीड कर लोगे प्लीज? State what's meant by diffraction and by interference. हम्म, क्या होगी डिफ्रैक्शन में? The spreading out of waves as they pass through a gap. ओके, अगर गैप से पास हुई तो फिर स्प्रेड कैसे हो रही है ना? ओए होए, अबे थोड़ा अच्छे तो बताओ यार, कम ऑन। स्प्रेडिंग As ऑफ, they pass through a gap or around a bend. गुड। गैप, स्लिट बोल दो या एज Okay. बोल दो या अपर्चर बोल दो, राइट? स्प्रेडिंग ऑफ वेव आफ्टर passing through the slit, okay, or edge, okay। इंटरफेरेंस में क्या लिखे? Superposition of two coherent waves. हम्म, सो हम कह सकते हैं कि भाई when two um two waves, चलो सही है, when two waves superimpose, ओके, तो उससे होता क्या है? Their
where resultant displacement equals sum of individual displacements. Good. So their resultant displacement is equal to sum of सर लेकिन ये तो सुपरपोजिशन की डेफिनेशन है. तो फिर इसमें क्या मसला है? ये आपने जो लास्ट लाइन लिखी है ये सुपरपोजिशन की डेफिनेशन नहीं है. तो क्या लिखना चाहिए? सर लेकिन ये इधर आपने लाइक वो सेम पॉइंट एक्सप्लेन नहीं किया. एक मिनट when the two waves superimpose. सो आप ये कह रही हो कि भाई सुपर इम्पोज लिख दिया तो फिर दूसरी पॉइंट लिखने की जरूरत नहीं है? यस. जी. um नहीं, you have to explain it. क्योंकि इंटरफेरेंस के अंदर सुपरपोजिशन हो रही होती है और आपको सुपरपोजिशन ही को तो एक्सप्लेन करना है. या चलो, अगर आप सुपरपोजिशन नहीं लिखो, अगर आप इस वर्ड की जगह पे ये लिख लो कि भैया आप जो हो when the two wave overlap, या मे बी when the two wave meet, okay, when the two waves superpose. सही है. तो और फिर उसके बाद जो है ना ये आप बाकी चीजें लिख सकती हो. सही है. Okay. अच्छा, लेकिन इसकी एग्जामिनर बोल देखते हैं कि एग्जामिनर क्या कहता है इस बारे में. Okay, the terms such as spreading, okay, हमने भी use किया है, were used when referring the diffraction. Very few answers incorrectly refer to refraction. Nice. Most answers for interference did include the wave meeting at a point. Very few went to discuss the interference in terms of addition of the displacement. Look, बोल रहा है मतलब like अब you cannot left the question without saying कि वो नहीं हो रहा. सही हो गया. Okay. सही हो गया. अच्छा, एंड इंस्टेड ऑफ दैट व्हेन द टू वेव हम यहाँ पे लिख देते हैं सुपरपोज की बजाय हम यहाँ पे व्हेन द टू वेव मीट ये कह देते हैं. सही है. इंस्टेड ऑफ राइटिंग सुपरपोजिशन, राइट. ओके भाई, आ जाओ आगे आ जाओ. सर हम्म. इंटरफेरेंस और प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का एक ही मतलब है. यार थोड़ा सा डिफरेंस होता है. सही है. सर इधर इक्वल वेवलेंथ सेम वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी और स्पीड नहीं लिख सकते हम. ब्रो वो स्टेशनरी वेव बना देगा ना उसको, जरूरी थोड़ी है. Oh, सही है. Sir, then what's the difference? क्या चीज बिटवीन So द सुपरपोजिशन एंड इंटरफेरेंस? yes. देखो, superposition में we just talk about the addition of the the addition of the two wave displacement और के बस हम जो है ना वेक्टर एडिशन की बात कर रहे होते हैं. एंड फिर इंटरफेरेंसेस के अंदर हम हमारी जो टाइप होती है द कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस एंड द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो उसकी वजह से जो है ना वो उसको उन दोनों को डिफरेंट डिफरेंट बना देता है. राइट. बस ये होता और है बेसिकली. सर बेसिकली आपके पास जो है वो सुपरपोजिशन एक बड़ा फिनोमिना है और इंटरफेरेंस जो है वो छोटा फिनोमिना, राइट. एक्चुअली है वही चीज लेकिन वो एक छोटा फिनोमिना है. राइट. मैं बोलो. सर इंटरफेरेंस होने के लिए क्या क्या होना चाहिए? कांस्टेंट फेज डिफरेंस और बाकी क्या फैक्टर्स हैं? नहीं, दैट इज नॉट, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए. बस दो वेव होनी चाहिए और टू वेव ऑफ द सेम टाइप शुड मीट, दैट्स इट. कोहेरेंसी रिक्वायर्ड होती है जब आपको ये वो स्टेशनरी वेव जनरेट करनी है, राइट. और कोहेरेंसी रिक्वायर्ड होती है व्हेन यू वांट कंसिस्टेंट इंटरफेरेंस पैटर्न, पैटर्न. जैसे कि आपको जो है ना यंग्स डबल स्लिट के अंदर चाहिए, राइट. सो इफ यू आर डूइंग यंग्स डबल स्लिट एंड यू वांट द आउटपुट टू हैव द सेम वैल्यू ऑफ वाई, सेम वैल्यू ऑफ एक्स जो कि फ्रिंज स्पेसिंग है. सही है. बिटवीन एवरी डिफरेंट फ्रिंज स्पेसिंग. सही है. सो उसके लिए यू शुड हैव द कोहेरेंसी. ओके. Otherwise, if you are just talking about the interference generally, so you can have the two wave, they may be coherent, they may be not. Okay, so it depends. Clear? चलो. जी सर. आ जाओ भी, आगे आ जाओ. आगे रीड कर लो प्लीज. Light from source S1 is incident on the diffraction grating as illustrated in figure 6.1. Light has a single frequency of 7.06 times 10 to the power of 14 hertz.
The diffraction grating has 650 lines per millimeter. Calculate the number of orders of diffracted light produced by the grating. Do not include the zero order. Show you working. 3 नंबर दे रहा है and show your working. They're saying 600 line per millimeter. Okay, fine. Show your working के अंदर हम कुछ कह सकते हैं क्या? चलो फाइन, इन्होंने हमें फ्रीक्वेंसी दी हुई है एंड लाइट सोर्स. ओके ब्रो, डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है? 1 over n times sin theta equals n lambda. इतनी आगे चल रही हो साला, मुझे इसी में तो कंफ्यूज कर And देगा. lambda is equal to d sin theta. Oh, you cannot use that. Okay, fine. n lambda equals to d sin theta. वेरी गुड ब्रो, वेरी गुड. मनाली ने बहुत अच्छी चीज बताई है बट वो समझ में नहीं आएगी तुम लोग को. फाइन. ओके सो ब्रो, इरफान, where you get d from? Yes, Sir, I Irfan. don't know. Come on, you just quote the formula. Okay. 650 lines per millimeter. Isn't that Yes. d? Yes. But how will you use that here? So basically, D has a formula, capital D over N. Okay, it's just the cross multiplication though, right? So capital D is the total distance in which the given number of line adjust. Okay, so we have given 1 millimeter length. Okay, and in that 1 millimeter length, we have 650 lines. Okay, so this way we can find out the distance or the width of one line. Okay, so now you can use it right here. Okay, -3 over. Sir, can we use 1 over 650 to get the small d? But it's in millimeters, so why are you not converting it? If वो कहता है कि 650 lines per meter, right? Then you can do that. Okay, getting ना? जी sir. So 1/650 कर देंगे. 1 over मीटर के अंदर, पर मीटर के अंदर. हाँ सही. यस यस यस. ओके. अच्छा जी, कौन पढ़ा था क्वेश्चन? मनाइल. मनाइल, इसमें एंगल क्या लेने ब्रो? 90. क्यों बे? इसने कहा मैक्सिमम. Yeah. Yeah. ओके, 90. गुड. सो ओके. अच्छा जी, लैम्डा कहाँ से आएगा? Speed divided by frequency. Okay, so you're saying V equals F lambda. Okay, and सर what's इधर the मैक्सिमम speed? कहाँ लिखे? सर हाँ बोलो. सर वो मुझे कल स्कूल जाना, मम्मा गुस्सा कर रही हैं, तो मैं क्या जाऊं? बिल्कुल चली जाओ यार. थैंक यू, सॉरी, हाफिज. हाफिज. अच्छा जी, और रैम क्या बोल रहे हो? सर इधर हम एंगल 90 क्यों लेंगे? उन्होंने 9 बोला है नॉर्मली और 9 मैक्सिमम बोला. नॉर्मली तो वो कभी भी नहीं बोलता. उसने कहा सारे नंबर ऑफ ऑर्डर निकाल दो, तो उसके लिए 90 लोगे और क्या लोगे? ओके. उस ये स्टेटमेंट पढ़ो ना आप. ये क्या कह रहे हैं? सेंस नहीं बन रहा इससे. द नंबर ऑफ ऑर्डर्स डिफ्रैक्टेड. ओके. बाय द तो सर ग्रेटिंग. हम्म. तो हम टोटल ऑर्डर्स निकाल रहे हैं. हाँ जी, टोटल ऑर्डर बेसिकली एक साइड के. हाँ तो फिर वो मल्टीप्लाई बाय 2 कर वो देंगे. वो वाला काम नहीं करना. इधर नहीं करना वो. ओके. बल्कि नहीं, वो करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई बाय 2 करना पड़ेगा, लेकिन वो +1 नहीं करना पड़ेगा आपको, राइट? हाँ तो क्योंकि खैर. कह रहे हैं डोंट इंक्लूड द जीरो ऑर्डर. हम्म. तो चलो भाई, मल्टीप्लाई कर दो. सो 7.06 एक्सपोनेंट 14 डिवाइडेड बाय 3 एक्सपोनेंट 8. ओके, मल्टीप्लाई कर दो प्लीज. कैलकुलेटर है भाई? बाय द ग्रेटिंग. साइन 91 हो जाएगा. सो जस्ट राइट Sir, 3. 3. Is n 3 We're getting or are you 3.6. Thus n 3.6? will be 3.
Okay, so n is 3. Okay, fine, because the third order will not be completed. अच्छा, by the way, आपको पूरे नहीं निकालने होंगे. You just have to find out the orders from any one of the side, any one side. Okay. So सर how will आपकी we So know that विलन कितनी? we don't have to multiply it by 2? एक मिनट, एक मिनट, अबे मेरे को वो करने दो. कौन दूसरा क्या बोल रहे हो? इब्राहिम क्या बोल रहे हो? सर आपकी वेवलेंथ क्या है? भाई मैंने निकाली नहीं है, बच्चे बता रहे हैं डायरेक्ट आंसर, ये मैंने रखा हुआ है. डायरेक्ट रख दो, कैलकुलेटर में आ जाएगा. साइन 90 डाल दो, बस बाकी सारी चीजें. अच्छा जी. सो they have given you the zeroth order. Okay, the light on single frequency diffracted. Okay, calculate the number of orders of the diffracted light produced by the grating. Do not include the zero order. Okay, fine. So if they say the total number of order, okay, total number of order, or if they say the order is in 180 degrees, then you have to do multiply by 2 and plus 1. If they also say भाई include कर लो zero order, right? समझ लो ये से बात. जी sir. And if you just check the marking key, in general relevant formula was quoted. There was some confusion as regards lines per millimeter. Okay, power of 10 error gave rise to some answer which were inappropriate. There may have been some doubt as to the meaning of the orders of the diffracted light, and consequently answer of 3 or 6 order were accepted. Okay, समझ लो ना? हैप्पी हैप्पी. एग्जामिनर खुश हो गया भाई. एग्जामिनर ने कहा कि ओके भाई, बच्चे कंफ्यूज हैं. यहाँ पे कितना दे रहा है? ओके, यहाँ पे देर ओनली राइटिंग 3, बट इफ यू रोट 6 दे विल आल्सो गिव यू द मार्क. ओके, क्लियर ना भाई? सो अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन ऐसा सेंस बना रहा है कि जिसमें तुम्हें बिल्कुल कोई क्लू नहीं मिल रहा, इफ यू राइट द अदर पॉसिबल आंसर, देन इंशाल्लाह you'll get the mark. ओके, क्लियर? आज भाई, सर बोलिए बोलिए. हम हमेशा राउंड डाउन करते हैं. हाँ जी, इसके अंदर ऑर्डर्स के अंदर हमेशा राउंड डाउन करते हैं, क्योंकि लाइक इफ इट इज 3.9, सो वो फोर्थ ऑर्डर पूरा कंप्लीट नहीं है ना, राइट? सो वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द कंप्लीट ऑर्डर्स. समझ गए? Okay. ओके, ये रीड कर लो. A second source S2 is used in place of S1. The light from S2 has a single frequency lower than that of the light from S1. State and explain whether more orders are seen with light from S2. Lower frequency, right? Single frequency lower than that. Okay, so if the frequency is smaller, then this means f will be down. Okay, so n smaller हो जाएगा, n कम हो जाएगा. सर अगर Sir, फ्रीक्वेंसी कम है तो वेवलेंथ ज्यादा होगी, और अगर वेवलेंथ ज्यादा होगी तो एन ज्यादा होगा ना? अबे कद्दू, कैसे ज्यादा होगा? n is not directly proportional with lambda, वो ओ inversely हाँ related है. सॉरी, हाँ जी 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 जी, हाँ. तो वो कम हो जाएगा. अबे सिंबल सिंबल से भंड मारो बेटा तुम. क्यों, क्या वजह है ऐसा? नाराज हो गए लगता है ना? फिजिक्स से नाराज हो गए तुम. नहीं सर, नहीं नहीं सर, वो मैंने भूल क्या क्या एन लैम्डा है मुझे लगा. ओके, सो चलो खैर. सो चलो आप वो कह मैंने रहे हो y ना, इक्वल्स टू वो डिफ्रैक्शन रेडिंग का मैंने यंग्स फॉर्मूला डबल यूज स्लिट कर लगा लिया. रहे हो. इंक्रीजिंग जी. द फ्रीक्वेंसी decreases the lambda. Okay, so उल्टा होगा. Sorry, decreasing the frequency decreasing the frequency increases the lambda, increases lambda. So um lesser number of orders. Okay, चलो भाई, आखिरी क्वेश्चन इज नॉट अ पार्ट ऑफ सिलेबस. ओके भाई, पार्टी सीन हो गया, जो बस पेपर एंड हो गया. सही. अच्छा भाई, प्लीज होमवर्क सुन लो, होमवर्क सुन लो, होमवर्क सुन लो. ट्राई टू अटेम्प्ट मई जून 2015 22 बाय टुमारो प्लीज. सही है. और जिनकी ये वीक की आखिरी क्लास है, जिन्होंने नेक्स्ट वीक में आना है अब, सो ट्राई टू डू अच्छा ओके, हमने वहाँ पे वो किया है ना, सो ट्राई टू अटेम्प्ट 21. बल्कि नहीं, वो मैं होमवर्क दे चुका हूँ तुम लोग को, वो तुम लोग को पता होनी चाहिए. सही है.
सो जो सैटरडे संडे वाले हैं, जो सैटरडे संडे वाले हैं, आई गेव यू गाइज होमवर्क एज 21 and 23 October, November and May, June 2014, right? And this paper. So basically you have to submit 5 papers after like after a week. Okay, चले चले जी। और बाकी जो जिन लोगों की कल क्लास है उन्होंने प्लीज़ ये चारों पेपर करके ये एक पेपर करके आना है। ओके, एंड प्लीज़ डू सेंड मी द पेपर एज वेल। जब कर लो तो प्लीज़ मेक द PDF एंड डू सेंड मी, ताकि मैं तुम्हारे मिस्टेक बता सकूं। ओके, नाउ चलो बस एंड करते हैं। चलें जी। ओके गाइस, टेक केयर बच्चों। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह Office. हाफ़िज़। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज़।